Good morning, dear students. In last lectures, we have taught an important ideas about the calculation of molar conductivity for strong and weak electrolytes. We have used Debye-Hückel theory for strong electrolyte. The formula is here: lambda m is equal to minus a root c plus lambda 0m. And for weak electrolytes, we are using Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Here alpha is equal to lambda m upon lambda 0m. This was our last lecture. But in today's lecture, we will study that how can we find lambda m, molar conductivity of electrolyte compound. It is very important question. Just see, we will explain this on this way. Okay, if we want to find molar conductivity, the formula is here: lambda m is equal to 1000 into K by C. Okay, so if we want to find K, C is a known, it is concentration, but if we want to find K, we will use G into L by A, conductance into cell constant. Okay, but if we want to find G, we will use 1 upon R into L by A. So if we want to find molar conductivity, K is very important factor, specific conductivity. Nowadays, IUPAC accept specific conductivity is equal to conductivity, but the units are different. Okay, so now we have to find lambda m. How can we find? So with the help of L, A and R, we can easily find K. We will put the value of K in this equation, then we will find lambda m. Is it clear? But the very important question arises in our mind, that how can we find resistance, length and area? Length and area is very easy for this type of physical substance, because if we want to find length of this pen, we can easily use the scale for this point, and we can easily find the area. Length into breadth is equal to area, L into B is equal to A. But for solution, for electrolyte compound, how can we find length? Because if we have 500 ml NaCl solution, how can we find L? How can we find A? It is very hard for ionic electrolytes. And how can we find resistance? Again, it is a very important question. So, for the finding of resistance, we will use Wheatstone bridge. I think you all the students are aware about the Wheatstone bridge, because with the help of Wheatstone bridge, we can easily find the resistance of any compound. So this is the main use of Wheatstone bridge. Okay, so Wheatstone bridge is important for the finding of resistance. Okay, next question arises in our mind. If we want to find resistance, two important problems occurs. Which type of two problems? The problem number one, if we use DC, direct current, the composition of compound will totally destroy due to DC. So direct current, we cannot use direct current. So when we want to find the resistance with the help of Wheatstone bridge, two problems will create. DC, change the composition of compound. Second, we cannot connect the electrolyte solution with wire. We cannot connect electrolyte solution with wire. Clear? So these are the two important problems we will obtain here. So when we want to find the resistance with the help of Wheatstone bridge, two problems we create. We cannot use DC because the composition of compound will change. We cannot connect the electrolyte solution with wire. Just imagine कि हमारे पास एक बीकर है, समझ लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है बीकर में, तो सीधा ऐसे ही थोड़ा अंदर वायर रख देंगे और बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे. हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट अगर प्रॉब्लम दुनिया में है
तो उसका सॉल्यूशन है, उसी को प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि स्टडी स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। और मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है आप सबके फीडबैक देख के, जिस तरीके से आपने स्पेसिफिकली मुझे मेरी एनर्जी को जिस तरह से आपने, हम समझ लीजिए कि आपने अच्छी तरीके से वो बोला है, मोटिवेट किया है मुझे, मेरी एनर्जी डबल हो गई है। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको जो भी चाहिए, जो भी स्टडी में आपका माइनस पॉइंट रह रहा है, वो मैं कैसे दूर कर सकूँ और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको कैसे दिला सकूँ, इस तरीके का आपने मुझे फीडबैक दिया है। मेरी एनर्जी आप सबने डबल कर दी है, और एनर्जी तो डबल हो गई पर मुझ पर प्रेशर भी बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पे, आप जो मेरे साथ जो कनेक्ट हो गए हैं और जो आपने होप लगा रखी है, उसको मैं कैसे पूरा करूँगा, वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज है। पर चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे बहुत ही पसंद आता है, और इस तरीके का चैलेंज कि जब स्टूडेंट्स के अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकालने हो, तो उस तरीके का चैलेंज मैं ऑलवेज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता हूँ, मुझे पसंद भी आता है। सो थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली फर्स्ट स्कूल स्टूडेंट्स वो एनकरेज मी। तो आप सबको मैं इसी तरीके से थैंक यू बोल रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया विस्टन ब्रिज वाला, तो उसका सॉल्यूशन करना है। उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, डीसी की जगह हम एसी का यूज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, वेरी इजी सॉल्यूशन। और ये जो वायर वाला प्रॉब्लम है ना, कैन नॉट कनेक्ट द सॉल्यूशन विथ वायर, वी विल सॉल्व विथ स्पेशल डिजाइन कंडक्टेंस सेल। So we will use special design conductance cell for the solution of this problem. Is it clear? Again I repeat my words that if we want to find resistance, we will use Wheatstone bridge. Second important, but there are two important problems create. Number one, we cannot use DC because it will change the composition of compound. We cannot connect the electrolyte solution with wire. For the solution of these two important questions, we will use AC and we will use the special design conductance cell for the solution of the connection of wire. Okay, so these are the solutions of these two problems. Now the second important question arises in our mind, that how can we find L and A? With the help of Wheatstone bridge, we will find R. But before starting R, L and A are important parameters. What is L for solution? So just see, this is special design conductance cell, a long small diameter glass tube. We will add electrolyte solution in it, and the connection of the solution with platinized electrode with metallic wire. Platinized electrode and metallic wire is here. So this is the figure of conductance cell. This is again optional figure for conductance cell. We will use vertical conductance cell, and same as we have horizontal conductance cells also. Both are perfectly work with Wheatstone bridge. Okay, so what is the distance between two rods? Just what is L? The distance between two rods, this one is L. We are writing here L. And the area of this platinized rod is A. L into B. So the area of platinized electrode, L into B, that is A. We will divide L by A, L and A. This is our cell constant, and we will use the symbol for cell constant is G star. Okay, so this is L and A in this conductance cell. Now we will go in a Wheatstone bridge. So what is the construction of Wheatstone bridge? देखिए मेरी हॉबी यही थी कि अगर हम लाइव स्टडी करते होते ना, तो ये आंसर के लिए मैं फिजिक्स लैब में जाने वाला था। भले मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, पर मैं फिजिक्स लैब में आपको Wheatstone ब्रिज का सीधा प्रैक्टिकल करवाने वाला था। बट अभी जो सिचुएशन है उसी को मैं कंडक्ट करके आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है पी डिटेक्टर, हेडफोन हमें कान में रखना है साउंड वेव्स सुनने के लिए। R1 ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि की मदद से ये चेंज होगा। की का यूज करेंगे रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए। R3 R4 ये नॉन रेजिस्टेंस है। ये है O, AC करंट हम किस तरीके से पास करेंगे, ये ऑसिलेटर 550 to 5000 साइकिल पर सेकेंड।
का साउंड वेव्स इसमें से पास होने वाला है. सो विल पास द साउंड वेव्स ऑफ 550 to 5000 cycle per second with the help of oscillators. And in this stage, unknown resistance R2, we will use conductance cells. यहाँ पर हमारा conductance cell सेट होगा और ये सब प्रोसेस यहाँ पर आगे बढ़ती जाएगी. तो ये यहाँ पर आ गया डीसी. देखिए यहाँ पर हम बैटरी का यूज करेंगे तो ये सब कुछ का कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, इसको सीधा यहाँ पर रख देंगे. समझ सकते हैं आप. और वहां पर डीसी की जगह में एसी करंट पास करने वाला है, साउंड वेव्स पास करने वाला है. बीच में से रेजिस्टेंस में सेट किया हुआ है, इसीलिए उसका मेजरमेंट अच्छी तरीके से हो सके. यहाँ पर बैटरी नहीं कनेक्ट करें, इसको सीधा यहाँ पर रख देना है. वहां पर अननोन रेजिस्टेंस हमको मिलने वाला है. ऑसिलेटर से जितने साउंड वेव्स पास हो गए, हम हेडफोन सुनने के लिए बैठे, जैसे ही साउंड क्लियरिटी में मिलने लगेगी उसी वक्त हम R1, R3 और R4 की वैल्यू देख लेंगे. कौन सी रहेगी? देखिए ये पैरेलल सीरीज की फॉर्मूला R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4. यहाँ पर R2 को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मिलेगा R1 R3 by R4. ये R2 हमारे पास आ गया, या अननोन रेजिस्टेंस. ये रहेगा हमारे पास R2 which is unknown resistance. R2 is equal to R1 R3 by R4. उसको हम रख देंगे यहाँ पर. ये मिल गया K, ये मिल गया लैम्बडा है. बात खत्म हो गई. समझा? विष्णुविद की बात समझे? ये डिटेक्टर हेडफोन जिससे हमें साउंड वेव्स सुनने हैं, ऑसिलेटर से एसी करंट पास हो रहा है, वो पास होके साउंड वेव्स हमारे आयोनिक कंपाउंड में से पास होंगे. जब भी साउंड वेव सुनाई देगा उसी वक्त मेजर कर लेंगे R1 R3 और R4 यहाँ पर रख देंगे. मिल जाएगा R, मिल जाएगा R, मिल जाएगा K, मिल जाएगा लैम्बडा. इस तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन क्लियर कर सकते हैं. So this is the question, that the measurement of molar conductivity for ionic compound. I will repeat it again. First of all, if we want to find resistance of any compound, we will use Wheatstone bridge. But there are two problems for Wheatstone, for the using of Wheatstone bridge. Number one, we cannot pass DC because composition of compound will change. We cannot connect ionic compound with wire. So the solution of these two problems are here. We will use AC instead of DC. And we will use a special design conductance cell for the connection of wire problem. So in special design conductance cell, long small diameter glass tube will use. We will fill the electrolyte solution in it. We will connect the solution with the help of platinized electrode. Distance between the two platinized electrode is L. And the area of platinized electrode is A. L by A is equal to cell constant. We will use G star symbol as a cell constant. Okay, so we will find L by A, but the value of L by A is not constant because it is in our hand that which type of distance will we take, or we will keep between this solution. ये आप देख रहे हैं, आ તમે ચેન્જ કરી શકશો. આ તો નજીક આવી શકે, દૂર આવી શકે, તો એ થોડું ફિક્સ થાય. ડાયામીટર એ ફિક્સ વેરિએશન વાળું છે, બટ જેના માટે જેવું કરતા હોય એના માટે રેઝિસ્ટન્સ જોવાનું, એ બદલાવી શકો તમે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ L by A. Then how can we find R? So R1 variable resistance, oscillator થી આપણે 550 to 5000 સાયકલ પર સેકન્ડના સાઉન્ડ વેવ્સ પાસ કરશું. R2 છે અહીંયા આપણે કંડક્ટન્સ સેલ સેટ કરી દીધો હશે, એમાંથી સાઉન્ડ વેવ પાસ થશે, હેડફોનથી આપણે સાંભળશું. જેવો હેડફોનથી આપણને એની ક્લિયરિટી આવે એ ભેગું જ R1 R3 R4 મેઝરમેન્ટ કરી લેશું, એનામાં મૂકી દેશું એટલે R મળી જાય છે. R ને અહીંયા મૂકી દેશું એટલે લેમ્બડા એમ આપણને મળી જશે K ઉપરથી. This is the formula for the finding of molar conductivity. Clear? આની ઇમેજ પણ હું તમને સેન્ડ કરી દઈશ, અને આનું જે કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પ્રિપેર કરવાનું છે એ બી હું તમને સેન્ડ કરી દઈશ. બટ ફિલહાલ ક્વેશ્ચન કેવી રીતના છે તો બોર્ડ વર્ક તમે ચેક કરી લો, તો ઇમેજ તમને સેન્ડ કરું છું.